and far student. Then I have discussed the solitary report written by the poet of nature known as William Wordsworth, who compares with our Odia literature poet Gangadhar Mehra. He always tried to level best about the natural site of the village known as Supar. Those who are always trying to level best about the landscape area, also including with your natural and nature, he always prays by the help of his words, natural site and praise by the God. Then we have discussed the solitary reaper is a new adapt poem. The William Wordsworth came to 7th April 1770, passed away 23 April 1850. But these days he always worship about the poet, about the nature and natural scene of the society. He gives us kinds of natural side. We always today's or these days we always try to level best how to use natural side by the help of our eye. But he gave us about kinds of natural side by the help of a incarnation with our natural side. Then you see passage 1, stanza 1, also including with us the solitary reaper. Who is the solitary reaper? Solitary reaper is a single girl always trying to level best about a melancholy song. By the help of that song was not understood by the poet, but that lyric is always behold the poet. Then you see number 1, behold her single in the field. A girl standing around the valley, on land, try to level best a song by the help of the nature. The behold her single in the field. देखो एकुटिया से जमीरे बा से पड़ियारे रही बा क्षेत्र रही. Yon solitary highlandless. Highlandless which means pahadi kanya. Then yon solitary, yon is a old English use over चारिआडे भरपूर होगी रही जो कथाटा कहुच्छी. येन solitary highlandless. Highlandless means पहाड़ी कन्या. Reaping and singing by herself. निजुक निजे से कौन करुच्ची ना शस्य गुड़ाक काटुची एवं गुणगुण होगी ता मने मने से गीत गुड़ा गाउची. Reaping and singing by herself. Stop here or gently pass. Those who are going to that path always stand and stare and listening the voice of the girl. That girl is listening in a language, that language not understood by the poet, but that lyric is always behold the poet, which means is behold her single in the field, yon solitary highlandless, reaping and singing by herself, stop here or gentle pass. धीरे धीरे बा मृदु गति रे काले ता गीत रे स्वरभंग हो जीवो ताले धीरे धीरे कौन करुई ना सही बाटे देकी लोक माने जाउछंती किंतु कवि जते बेले धीरे 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 पहाड़ को उठुचंती सेते बेले से लक्ष्य करुचंती चारिआडे पर्वतमाला मझिरे झियो छुआटी छिड़ा होइछि गुणगुण हे गीत गाउछि एवं ता शस्य क्षेत्र रे से काम करुछि. तेणु सी कहते कौन जो गीतटा से गाउछि व्हिच सॉन्ग sang by the girl I do not understood about this but I behold. Why? Na that song and sweet accord and sweet voice that behold to me. So behold dekho her single in the field your solitary highlandless. Highlandless pahadi kanya.
हाइलैंडलेस है पहाड़ी कन्या, पहाड़ी कन्या। बिहोल्ड लुक देख, लुक हर सिंगल इन द फील्ड, योन ओवर, ओवर सॉलिटरी एलोन, हाइलैंडलेस पहाड़ी कन्या। देन रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, निजकु निजे से कौन कौची ना से धान गुड़िक बा शस्य गुड़िक बांधुची एवं गीत मध्य गाउची। स्टॉप हियर, से जगह से रहिले और जेंटल पास, मृदु गति रे धीरे धीरे गोड़ आगु आगु पकई से कौन कले ना चलिले। देन यू सी नंबर 2, एलोन सी कट्स एंड बाइंड द ग्रेन, एलोन एकुटिया से झोटी कौन करुच्ची ना शस्य गुड़ी को काटुची एवं ताकू निजे मध्य बांधुची। एंड सिंग्स ए मिलांकुली स्ट्रेन, मिलांकुली स्ट्रेन व्हिच मीन्स इज सैड सॉन्ग, व्हिच मीन्स इज सैड सॉन्ग बोली कह जाउची। देन यू सी एंड सिंग ए मिलांकुली स्ट्रेन सैड सॉन्ग, से गीत मने मने गोटे दुखपूर्ण गीत गाउची, ता माने अभुला स्मृति ताने किसी हजि जाइथिबा तार उपरे गीतटे होइथाउ बा किए तार बापा होइथाउ कि माँ होइथाउ किए ताको भल पाउथिबा कई जणे तार निजर लोक अंतरंग लोक होइथाउ तारी संबंध से गीत गाउछु बोली एठी अनुमेय करा जाउछि। तेनी एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रीन, से कौन करुछि ना एकुटिया शस्य को काटुछि आ बांधुछि आउ कौन करुछि ना दुखपूर्ण गीतटा गाई चलीछि। ओ लिसन फॉर द भेल प्रोफाउंड, ओ लिसन हे शुण से कौन गाउची, पार्टी कई एठी डिस्टर्ब करनी बा कई हो हल्ला करनी, तेणु शुण से झीटी की गीत गाउची। ओ लिसन हे शुण तारे फार द भेल प्रोफाउंड, खूब दूररू भासी आसुची कौन ना से जो झीटी जो दुखपूर्ण गीत गाउची खूब दूररू से गीतटा कौन होची ना धीरे 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 पवन रे हिल्लोलित होइकी आसिके पाखरे पहुँचुची। इज ओभरफ्लोइंग विथ दि साउंड, जेमिति गोटे घर भितर कथा हेले जमी इको सृष्टि हुए, थरे कहले जमी बारंबार बारंबार ध्वनित हुए जोटा को इको बोली कह जाउछि, बारंबार कान पाखरे प्रतिध्वनित हुए जोटा मन भितर प्रतिबिंबित हुए, से कथार को कह जाउछि इज ओभरफ्लोइंग विथ द साउंड। एठी हला ओ लिसन फॉर द भेल प्रोफाउंड, ऑल ओवर, all over the, all over the भेल, भेल चारिआडे कहबार सेंस होउछ कोन ना चारिआडे। ओ लिसन फॉर द भेल प्रोफाउंड इज ओभरफ्लोइंग विथ द साउंड, से शब्दटा कौन होउछि पहाड़ पर्वत उपत्यका को पार करी धीरे धीरे आसी कान पाखरे पहुँचुची बा प्रतिध्वनित होउची। नंबर 1 आसिला बियोल्ड हार सिंगिल इन द फील्ड येन सॉलिटरी हाइलैंडलेस रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हियर और जेंटली पास, एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग ए melancholy strain, O listen, for the veil profound is overflowing with the sound. Then you see, nature and natural sight, both are correlated between each other. It has kinds of panorama sight, landscape sight, scenic sight, also kinds of natural sight, but we the people of world know and unknown about the sight, but the poet William Wordsworth always try to level best about the praise of God, but creator, which means is God, creation, those things created by the God, always try to level best those who are man and woman, always trying to level best about the natural side of created by the God, जो always scenic beauty
of the our body and mind and heart and soul. Then you see number 3, no nightingale did ever chaunt. Nightingale which means is कोइली बा सुमधुर स्वर रे गाउथिबा गोटे पक्षी, तेणु नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट, से झियोटर गीतटा को the girl's voice compare with nightingale. Why? Na her song attracted by the poet, so he compared nightingale with the girl. But the girl voice or sweet echo always comparative with nightingale. Nightingale's voice is more less than the girl. तेणु नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट, एमिति केबे मध्य नाइटिंगेल बा सुमधुर स्वर रे गाउथिबा पक्षी स्वर मध्य एमिति से गाई परिबो नाही. ताले देन यू सी दी पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर दी गर्ल एंड नाइटिंगेल्स by the help of write the poem about the lyrical sense, always try to level best which nightingale compare with your girl. The girl is singing a melancholy song that would not understand by the poet, but his voice, his sound, his echo always behold the poet. No nightingale did ever chaunt, more welcome notes to weary bands. More welcome notes, से जो स्वागतर गीत गाउछि वेलकम नोट्स जिमते आमे प्रीवियस क्लास रे पढ़िथिले, प्रीवियस क्लास रे पढ़िथिले कोन ना फॉरेस्ट नोट जंगलर गीत, एठी आतला वेलकम नोट्स, एठी आतला कोन स्वागतर गीत टू वेरी, स्वागतर गीत स्वागतर गीत टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर इन सम शेडी हाउंट एमंग आरबियन सेंट्स. झीटी जो जो शस्य क्षेत्र उपर काम करुच्ची सेठी हूँ कौन गोटे डेजर्ट, डेजर्ट बोले मरुभूमि, मरुभूमिर खंडे खंडे जो अल्प वृष्टिपात जो शस्य उत्पादित हुए से जगार से झीटी काम करुच्ची. जितेबाला मरुजात्री मैंने से बाट देखिए जाऊँगी, जो गछ सब रही जो छायावृत गछ सब रही तले विश्राम नौकरी, विश्राम ने क्षण भावुं ये गीतटा कौटू आसूँ, ये गीतटा किए गाँची, ये गीतटा एमती प्रतिध्वनित होता जे मरुजात्री मानक छाईर बसला भली, छाईर बसिले जमी आमे माने प्रबल खरारे जाउथिला बेले जदि गोटे छायावृत जगह मिले आमे जेमिति सेठी बसुछंती, ठीक सेही भली ये गीतटा थिला मरुजात्री मान पाई गोटे छाया सदृश. ये समस्त कौन करुला गीतटा ना संतुष्ट कर दे पारुथला. नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट, मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर इन सम शेडी हाउंट. समस्ते कौन करते ना जितेबले मरुभूमि केवल बाली जोटी गोटे गोटे गछ रही टी छाई हेले मरुजात्री मैंने से विश्राम नियंती. ये से कथा कह कौन शेडी हाउंट विश्राम स्थल बोली जोटा कहुच्छे. एमंग आरबियन सेंट, आरबर बालुकापूर्ण रास्तार गला बेले मरुजात्री बोली कहुच्छी, पाथर्स ऑफ डेजर्ट बोली जोटा कहुच्छी. से मैंने कौन कर गोटे स्थान खोजुंट जो जगह टे छाई टे विश्राम करवा, किंतु छाई पीवा बदल में ये झीटर जो गीत ताको कान पाखे प्रतिध्वनित होउची बा ता कान पाखे इको सृष्टि करुची, ता द्वारा कौन होउची ना से माने भाबुचंती आमु सते गोटे शीतल छाया मिलगला. देन यू सी नंबर 1, बियोल्ड हर सिंगिंग इन द फील्ड योन सोल्टर आइलैंड लैस रिपिंग and singing by herself, stop here or gentle pass. Alone she cords and binds the grain and sing a melancholy strain. Oh, listen for the veil profound
is overflowing with the sound. No nightingale did ever sound more welcome notes to weary bands of traveller in some shady haunt among Arabian saints. Stanza 1, stanza 2, stanza 3. Then you see, stanza 1 is always just to us about the girl is alone. There is nothing else about front and back. So he always amuses herself by the singing a song. That song she sings, but those who are pathors, but pathors of the desert, nothing else about the meaning the song, but their sound, their echo made the all over the pathors like a shady hound. So the poet not hesitate that song. He did not understood about the song, but their sound, that voice or sweet accord always amused the poet. So alone she courts, the girl alone worked hard, then cut and bind the corn, but murmuring, singing herself and sings a melancholy strain. According to poet, that song was melancholy not only the girl but also the pathos of the desert, but who would not about the meaning of the word, but that sound always gave them, not only them but also I which means poet, behold about the song. Oh, according to poet, oh listen for the veil profound, those who are going to that path, that street, that road, valley path. Oh listen for the veil profound is overflowing with the sound. That sound is overflowing, ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା, ପାହାଡ଼ରେ ଧକ୍କା ଖାଇକି, ଉପତ୍ୟକାରେ ଧକ୍କା ଖାଇକି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମରୁଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଇଜ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ଦି ସାଉଣ୍ଡ, ସେ ଯେଉଁ ଗୀତର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଝି ନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱର, ତାର ଯେଉଁ ମଧୁରତମ ସ୍ୱରଟା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ପାଥର ଯେଉଁ ବାଟେ ଦେଇକି ସେ ବାଟେ ଯାଉଥିଲେ, କବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାନରେ ସେ କଥାଟା ବାଜୁଥିଲା। ତେଣୁ no nightingale did ever sound cuckoo bird as a nightingale. That sound is not compared with the girl. The girl sang a song like nightingales, but more echoed about the song. More welcome notes to weary bands. That song had an internal meaning. That meaning is welcome notes. That song had a central idea, moral idea, ethical idea. That means it's more welcome notes to weary bands. Then you see, of traveller in some shady haunt, those who are pathors, desert pathors, trying to a shady place take rest before the sun, they are shady haunt by the song among Arabian saints. ମରୁଯାତ୍ରୀ ତପ୍ତ ବାଲି ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ, ଗୋଟେ ଗଛର ଆଶ୍ରା ଖୋଜୁଥିଲା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଝିଅ ଛୁଆଟିର ଯେଉଁ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ ବା ସୁମଧୁର କଣ୍ଠର ଗୀତ
तांको कान पाखरे प्रतिध्वनित होउथुला मरुयात्री माने भाबुथुले ये गुटे कौ गछर छाई बा ये सुमधुर गीतटा आम पाई होउची गुटे कोन ना छाया बा शीतल जगह बोली से माने अनुभव करथुले तेनु बिहोल्ड हार सिंगल इन द फील्ड योन सॉलिटरी हाईलैंडलेस रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ स्टॉप हियर और जेंटली पास alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever shout more welcome notes to weary bands of traveller in some shady haunt among Arabian saint. Dear student and far student, those who are not knowing about the meaning of stanza number 1, number 2, number 3, you comment by the YouTube. I try to level best about the gist stanza 1, gist stanza 2, gist stanza 3. Then number 4, number 6, number 7, number 8, more and more. I have discussed about the solitary poem as comes 7th April 1770, then passed away 23 April 1850. The poet was a person of worshipper of the nature. Compare with our nature poet in Odia, Gangadhar Mehra, always try to level best about scenic natural scenery, natural beauty of nature. Those beauty creates by creator. Creator means God. Always behold, then you see alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Or listen, for the vale profound is overflowing with the sound. No nightingale did ever shout more welcome notes to weary bands of traveller in some shady haunt among Arabian sand. You feel and you or feel about the song. Why he says so? Who is he? The poet is he. Who is I? The poet is I. Because I behold, I is absent here, behold her single in the field. Behold, dekha, look, who is she? She is a girl. Always work until alone she cuts and binds. Then you see, alone she cuts and binds. काटुची एवं बांधुची ता भद्रे कौन करुची ना निजकु निजे गुणगुण गुणगुण हे गीत गाउची. And sings a melancholy strain. What kinds of song he sang? Now that melancholy strain song, that means it's a sad song. Oh, listen, for the vale profound. जोटा कि उपत्यका पहाड़ पर्वत को सबू धक्का खाई खाई आम मन भितर बा आम कान पाखरे गोटे प्रतिध्वनि सृष्टि करुच्ची सेटा कहुच्छे. ओ लिसन फॉर द भेल प्रोफाउंड ऑल ओवर इज ओवरफ्लोइंग विथ दि साउंड. पहाड़ देर धक्का खाई जिते उछुड़ी पड़ुची पदा को बाहरी आउची बहिर्गत हो जाऊँगी से आम मैंने कौन होचु इज ओवरफ्लोइंग विथ दि साउंड. नो नाइटिंगेल डिड एवर साउंड. कोइली मध्य एमिति राब करि नाही. कोइलीर जो सुमधुर कंठ तुलना करा जाइछि ता स्वरठु मध्य झील छुआटर स्वर आहरी अत्यधिक बोली वर्णना करा जाइछि. का माध्यम रे ना कविଙ୍କ माध्यम रे. मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर इन सम शेडी हाउंड एमंग अरबियन सेंट्स. मरुयात्री माने आशा करुचंती आमु जदि कोठी शीतल छाई मिलंता एने गोड़ ताती जाऊँगी प्रचंड किरण सूर्यंकर प्रचंड किरण में आम ताई जाऊँ जदि गोटे शीतल गोटे गछ मिलता आम मैंने कौन करूँ ना से जगह जे विश्राम नियंतु ता बदल में ये झीटर गीत जा कान पाखे बाजुची से फिल कर ये मरु भूमि छाया सदृश ये गीतटा आम मानक विमोहित करुच्ची. टुडे
Is this much? Next class I have discussed with you next fourth stanza. Next moral, every stanza has a moral. Number 1, number 2, number 3, more than 9 have there is a more central idea and moral and gist. If you will try to label bet about the question and answer, try to label bet to you about the give me a answer, then you comment me by the help of YouTube. Behold, look, difficult word, then I write the difficult words, then other than difficult word you should not understand, you give me the comment. Today this was all the best.